maybe about your name, some basic stuff that you need to enter. Once you have done that, now you are ready to start any application that you have chosen to start online learning. So let's say now you started, कुछ इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस आता है. आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन. Now many of you know that new meeting is when you want to start a new meeting. Suppose अगर हमारे बीच में जो राकेश जी हैं, राकेश जी ट्रेनर हैं मान लीजिए स्कूल से, और राकेश जी को अपनी क्लास सेट करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए. उन्होंने अपना साइन अप कंप्लीट कर दिया है. Now after completing the sign up, he wants to now schedule a class for his students. For example, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास करने के लिए उन्होंने न्यू मीटिंग पे क्लिक किया. उनके आगे और सारे ऑप्शन हैं, शेड्यूल भी है, शेयर स्क्रीन भी है. तो न्यू मीटिंग राजेश ने तब इस्तेमाल किया when he wants to start the class immediately. But let's say राजेश जी जानते हैं कि वो अपनी क्लास, he wants to schedule his class for tomorrow at 11 AM. So राजेश जी have now started by clicking on the schedule option. काफ़ी सारे एप्लीकेशन में आप देखेंगे शेड्यूल वाला ऑप्शन आपको मदद करता है फ्यूचर में जो क्लासेस होने वाली है आप उसको पहले से शेड्यूल कर सकते हैं. तो आइए नज़र डालते हैं किस तरीके से शेड्यूल प्रेस करने के बाद में आपके सामने किस तरीके की स्क्रीन आएगी और आपको व्हाट इज दैट यू नीड टू फिल व्हेन यू हैव टू शेड्यूल द क्लास. लेट्स हैव अ लुक एट इट. So let's say these are the basic information that you again need to fill when you're scheduling a class. So राजेश जी का एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूँ. राजेश जी का कल क्लास 11 बजे है. तो उन्होंने पहले ऑप्शन में अपनी क्लास के बारे में लिखा कि मेरी क्लास लेट्स से NSDC की क्लास है. आपको हो सकता है राजेश जी की अगली क्लास दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में है, तो हो सकता है रिटेल क्लास है. और उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया है. कल लेट्स से 22 अगस्त को 11 बजे मैं क्लास लूँगा. इस ऑप्शन देख सकते हैं कि सिलेक्ट रेकरिंग मीटिंग ऑप्शन. इट इज आस्किंग यू वांट दिस क्लास टू हैपन एवरी डे लेट्स से सेम टाइम. देन अगर ऐसा चाहते हैं कि हर दिन रोज़ाना ये क्लास इसी समय शुरू हो पाए तो आपको ऐसे ऑप्शन को रेकरिंग मीटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आप देखेंगे आपके पास पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि बताया गया कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कोशिश करें कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मेक श्योर दैट यू हैव अ पासवर्ड डिजिटल ऑनलाइन क्लास दैट यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज. आप एक पासवर्ड जरूर रखें और पासवर्ड सेट करने के बाद में आप आखिरी में जैसा आप नीचे देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन इज टू शेड्यूल. दैट मीन्स नाउ राजेश जी इज वेरी मच रेडी टू कंडक्ट क्लास टुमारो एट 11 AM. सो ही इज रेडी नाउ. तो आपके स्टूडेंट के साथ जब उन्होंने ये क्लास शेड्यूल कर दिया, नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट ही नाउ नीड्स टू कीप इन माइंड व्हेन ही गोज लाइव टू कंडक्ट क्लास विद हिज स्टूडेंट्स. हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि राजेश जी को क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है जब वो प्रोफेशनल क्लास में लाइव जाएंगे. तो एक नज़र डालते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं. सपोज हमने डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, ये क्लास शेड्यूल भी कर लिया. लेट्स नाउ लुक एट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप. यूजुअली जब आप स्टार्ट करते हैं क्लास तो आपको पूछा जाता है ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो. आप सिलेक्ट करते हैं यस. जब आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस ज़्यादातर आपके स्क्रीन पे आ जाता है. रिगार्डलेस कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करें, मोरलेस सबका एप्लीकेशन का इंटरफेस pretty much looks like this. Some of the basic features which I'm sure many of you know, but those friends who are still trying to start their journey, for them it is important to understand. The audio online learning tools kind of allow you to start your video or switch off your video. So अगर आपको अपना वीडियो स्टार्ट करना है तो आप नीचे कैमरा जैसा ऑप्शन देखेंगे. All you need to do is click on that option. जब आप क्लिक करेंगे तो एक बार कैमरा ऑन होगा. जब आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे आप देखेंगे लाल कलर की एक ऐसी लाइन दिखेगी आपको. दैट मीन्स दैट द वीडियो इज नाउ ऑन. इट्स वेरी यूजफुल एप्लीकेशन. बहुत अच्छा फीचर, बहुत अच्छा है स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस के लिए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट. सिमिलरली अगर हम उसके बगल वाले में देखें एक माइक की तरह ये आपको सिंपल दिखाई देता है. दिस इज बेसिकली टू म्यूट एंड अनम्यूट योरसेल्फ. इसमें आप अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं. तो ये फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पे जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं. और हम अक्सर इस चीज़ को महसूस कर चुके होंगे. आई एम श्योर आप मेरी बात से अग्री भी करेंगे कि कई बार क्लास में शोर बहुत ज़्यादा होता है. क्लास में बच्चे को बोलने के बाद भी वो अपना म्यूट नहीं करते, वो ऑडियो मैनेज नहीं कर पाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ दिस फीचर. कि अगर क्लास में डिस्टर्बेंस है तो हमें किस तरीके से क्लास शुरू करने से पहले ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताने की ज़रूरत है किस तरीके से इन फीचर्स
का सही इस्तेमाल किया जाए। सो राजेश जी ने अभी वीडियो के बारे में जान लिया, उन्होंने ऑडियो के बारे में जान लिया. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज now Rajesh ji wants to share this meeting, this class link with the students. अब ये लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए राजेश जी ने इनवाइट पे क्लिक किया. इनवाइट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आप ये किसके साथ शेयर करना चाहते हैं. तो जैसे मेरे अकाउंट में कुछ मेरे दोस्त पहले से तैयार हैं जिनके साथ मैं अक्सर मीटिंग करता हूँ, बट लेकिन आपके केस में बिकॉज राजेश जी पहली बार शुरू कर रहे हैं, क्या हो सकता है राजेश जी कई बार कर भी चुके हो, उनको लिंक शेयर करने के लिए आप देखेंगे इनवाइट पे क्लिक करने के बाद से यू कैन सी देयर आर टू ऑप्शंस गिवन डाउन. वन इज कॉपी URL एंड सेकंड इज कॉपी इनविटेशन. सो यदि आप कॉपी URL पे क्लिक करते हैं, व्हेन यू क्लिक ऑन कॉपी URL, दिस कॉपी इज द लिंक ऑफ द मीटिंग दैट यू कैन नाउ शेयर विद योर स्टूडेंट्स. सो राजेश जी का कल क्लास 11 बजे है. सो राजेश जी ने आज मीटिंग शेड्यूल की एंड राजेश जी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ में उन्होंने लिंक भी आज ही शेयर कर दिया. सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स नाउ नो कल 11 बजे मुझे राजेश सर की क्लास में जाना है. राइट. सो दिस इज द यूटिलिटी, दिस इज द फीचर दैट विल हेल्प यू once you have scheduled the class, now how to invite students. Right. So that's why it's very, very important feature to understand for those brothers and sisters, those who are going to start their journey now. Let's move on to the next part of it. तो राजेश जी ने जब शेयर करने की बात की तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ईमेल किया. ईमेल करने पर भी वो ऑटोमेटिकली क्योंकि कॉपी कर लेता है, वो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप शेयर कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से. यू कैन ऑल्सो शेयर थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन ऑल्सो शेयर थ्रू SMS. जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड है स्टूडेंट से जिस भी प्लेटफॉर्म से, यूज दैट प्लेटफॉर्म टू शेयर द मीटिंग लिंक विद स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन जॉइन योर क्लास. नाउ वी हैव लुक्ड एट सम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज एप्लीकेशंस. Now next important feature which is very, very useful is now this. This is called sharing your screen. So that means जिस तरीके से मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप मेरा स्क्रीन भी देख पा रहे हैं. Now that becomes a very useful feature of these applications. And why it's important? Because आप जो भी लोगों को दिखाना चाहते हैं, be it एक फोटो दिखाना चाहते हैं, आपके कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप पोस्ट करके पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स को आप एक वीडियो के माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं. Even if you want to teach students using a video from different sources, this feature becomes really important at the time. So that means अगर राजेश जी को कल 11 बजे क्लास लेनी है, so now he clicks on share screen. Share screen पे उन्होंने क्लिक किया. अब उन्होंने उस विंडो को सिलेक्ट किया that he wants to show to the students. So let's say this time he selected that window that he wants to show, and after that on the bottom right you can see the second step is now to share that screen. So that means Rajesh ji is now all set to share the content with the student that he wants students to see. Right? So let's see what happens then. Now I believe all of us have conducted a lot of classes, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे. तो मैं चाहता हूँ जल्दी से, आप लोगों ने मेंटीमीटर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए कुछ देर पहले, एक और रिस्पॉन्सेज है बट इस बार क्विज टाइम की तरह है, और मैं चाहता हूँ हर कोई जो भी पार्टिसिपेंट है वो जल्दी से मेंटीमीटर पे जाए, menti.com पे जाए, माफ करिएगा, www.menti.com, और आप इस कोड को वहाँ पे एंटर करें. मैं कोड आपके लिए एक बार रीड करता हूँ. कोड इज 82463119. एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा और मैं चाहता हूँ आप उसका आंसर ज़रूर दें, और लेट्स सी कि हम में से कितने, बहुत सारे लोगों ने क्लासेस अटेंड किया है, ऑब्जर्व किया है या कंडक्ट किया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो आपको करना है menti.com पे जाना है और आपको कोड डालना है 82463119. मैं चाहूँगा कि अगर मेरे फ्रेंड्स आप मदद कर सकें, इसको चैट बॉक्स में भी अभी ये कोड डाला जा सके, सो दैट दोस्त आर फॉलोइंग द चैट ऑप्शन, आप वहाँ से इसको कॉपी कर दें, जल्दी से इसका आंसर दें. सवाल भी वहाँ पे है, इसीलिए मैं आपके सामने सवाल नहीं बोल रहा हूँ. जल्दी से आप जाएं और अपना रिस्पॉन्स वहाँ पे सबमिट करें. और साथ ही साथ मैं स्क्रीन को स्विच करके मैं खुद देखना चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों का रिस्पॉन्स कैसा आता है. सो आई विल ऑल्सो गो बैक टू द स्क्रीन टू लुक एट हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, एंड लेट्स लुक एट योर रिस्पॉन्सेज नाउ. सवाल पूछा
पूछा गया था, बहुत सारे दोस्तों ने रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो चुके हैं और मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सा सही आंसर है गलत आंसर है, बट लेट्स लुक एट कि हमारे दोस्त इसके बारे में क्या फील करते हैं। सो एक ही जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। सो आई बिलीव काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि आउटलुक इज नॉट अ डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। ओके, आई विल जस्ट टेक maybe I just wait for 10 seconds to understand कि और लोगों को क्या कहना है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, और फिर हम अपने अगले क्विज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो मोरलेस मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि आउटलुक इज नॉट अ डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, और ये सही जवाब है। आप जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बाकी और जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये ज़ूम, ये कहीं ना कहीं आपको मदद करते हैं डिजिटल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, बट आउटलुक आपका जैसे जीमेल है, जैसे याहू है, कुछ उस तरीके से आपका एक अकाउंट है, राइट। बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, इसी से हम बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर, और मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर भी इसी एक्साइटमेंट के साथ मुझे दें। इस बार आपको मेंटीमीटर में दूसरा कोड डालना है, और कोड है, याद रखिए, आपको जाना है www.menti.com पे, और इस क्विज का कोड है 1779038। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1779038। ओके, हम देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, स्पेशली व्हेन वी आर लुकिंग एट सेकंड क्वेश्चन। और मैं आप ही के सामने इस टूल का इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त कैसा फील कर रहे हैं। So, सवाल आपके सामने बहुत सिंपल था, ये वाला, यू कैन ओनली ज्वाइन एन ऑनलाइन क्लास यूजिंग अ लैपटॉप/डेस्कटॉप, यानी आपको केवल ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए केवल आप लैपटॉप के माध्यम से ही ज्वाइन कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? केवल वही माध्यम है और कोई कैन नॉट यूज एनी अदर टूल टू ज्वाइन द क्लास। ओके, ऑलराइट, okay, the response is very clear. A lot of people think it's false statement. Let me take you to the last part of the quiz and understand from you. While I understand maximum people are calling it false, and that's the right answer, that you can join online classes from your mobile phone also. So it was just to check that what is the understanding here. Now this gets me back to our last question, and I want you to answer that question in the real life. So let me take you back to that slide, and last question is this. So again, back to menti.com. This time the code is 3217508. I am repeating the code, 3217508. Now I'm going back to the last part of the quiz, and I'm sure आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। मैं जस्ट रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन बहुत आसान था, हाउ मेनी पीपल कैन ज्वाइन इन व्हाट्सएप वीडियो कॉल। बहुत सारे ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे लोगों के आ रहे हैं, और मैं इस टूल के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा। Why it becomes really important for us as a trainer to know about tools like these, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें, उनका पल्स चेक कर सकें कि उनको क्लास में कैसा लग रहा है। और ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आने लग गए। सो दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ नंबर और नंबर से ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि मैक्सिमम लोगों ने वो ऑप्शन चूज़ किया है। तो जैसे कि अभी हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 इज व्हाट मैक्सिमम पीपल आर सेइंग, दैट ओनली 4 पीपल कैन जॉइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल, एंड द रिस्पॉन्सेज आर इंक्रीजिंग। सम पीपल आर सेइंग 8 पीपल, एंड सम आर सेइंग as many as 500. The correct response, should I tell you the correct response? Okay. So the correct response now is that WhatsApp has allowed people to make video call to about 8 people. आप इस फीचर को ज़रूर इस्तेमाल करें और स्टूडेंट्स को भी गाइड करें। जब ऑनलाइन, जब कोलैबोरेशन की बात आती है, जब स्टूडेंट्स को पीयर लर्निंग करना है, किस तरीके से
ऐसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि किस तरीके से हम उसको यूजफुल बनाया जा सके। सो बहुत अच्छा आप लोगों ने रिप्लाई किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज हम देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। बट आप वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पे। दिस वाज टू चेक कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर, एज ए टीचर। आप स्टूडेंट्स के साथ जब क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो क्या आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इन अपडेट्स का आपको मालूम है? तो बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. Now it is very important to follow some guidelines when you are conducting online classes. Now why I say these things as a guideline is because जब भी आप क्लास शुरू करें बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ ट्रेनर आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में एक अच्छी जानकारी है, that you as a trainer you are well versed with that platform. For example, some of the free tools we discuss about offer 40 minutes free session. कुछ tools हैं जो 40 minutes का free session देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को नहीं मालूम होता है कि अगर आपको दोबारा यदि 40 मिनट्स के बाद इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू जॉइन द सेशन अगेन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक ऑन द सेम लिंक. स्टूडेंट्स कैन क्लिक ऑन द सेम लिंक एंड जॉइन द क्लास अगेन. You don't have to schedule another class and do not have to share another link with the students. Students can choose to start the class with the same link even after 40 minutes. So राजेश जी, अगर आपका क्लास 40 मिनट बाद रुक जाए तो आप स्टूडेंट्स को बोलिए डिस्कनेक्ट करने के बाद में आप दोबारा उसी लिंक पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. So that becomes really important for you to understand and also be able to communicate to the students before the class starts. Now, keep mic on mute when others are talking. It's a very important practice rather than etiquette जो हमें that we need to follow when we are conducting classes online. देखो it's a fact कि हम लोग अपने घरों से क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं and at times there is a lot of disturbance because ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास में एक कमरा अलग से हो that where you can conduct classes or attend classes, but because there is disturbance and that's a limitation, कोशिश करी जाए कि हम अपने माइक को म्यूट पे रखें जब हमें बात ना करनी हो. You can also choose to take a screenshot of the attendance. जब पार्टिसिपेशन लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया है. आप वहाँ स्क्रीनशॉट के जरिए आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास में ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स आते हैं. Some practices are like that. The only student who is asked a question will unmute and speak. आप स्टूडेंट्स को शुरुआत में बता दें कि मैं जिसका नाम लूँगी वो ही अपना माइक अनम्यूट करके मेरे सवालों के जवाब दे सकती हैं. इसीलिए ये आप लास्ट वाला देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर बाय ट्रेनर बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्रेनर्स को वो स्लॉट स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को अनम्यूट करके स्टूडेंट आप उनसे बातें कर पाएँ. बिकॉज क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो कनेक्ट होता है स्पेशली एक स्टूडेंट का, एक कम्युनिटी का, स्टूडेंट्स की या एक ट्रेनर और स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज दिस कि आप अपने स्टूडेंट से रेगुलरली बात करें, सिर्फ एक मीडियम पे ही रिलाई ना करें. कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स बट बी कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स. So some of the guidelines I just want to talk about, but these are the guidelines that you as a trainer should also create and share with your students. जिससे आपके स्टूडेंट्स को अच्छे से मालूम हो किस तरीके से क्लासेस अटेंड की जा सकती है. सो आगे बढ़ते हुए कुछ टूल्स के नाम मैं और आप लोगों के सामने बताऊंगा और आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर या चैट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं क्या आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या अगर नहीं करते हैं तो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं. ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं. सो एक टूल है गूगल हैंगआउट के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मोर लेस दी ऑप्शंस आर सेम. वीडियो कॉल करके आप इसको शुरुआत कर सकते हैं. वीडियो कॉल करने के बाद आप यूजली देखेंगे यहाँ पे भी आपसे लोगों का ईमेल आईडी मांगता है जिनको आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में अटेंड करें. दूसरा ऑप्शन जैसे कि हमने पिछले टूल में भी देखा, यू कैन कॉपी द लिंक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स और विद द पीपल हु यू वांट टू want as a participant in your online class. So by clicking on copy link to share, आप उस पर क्लिक करें, ये by default उस लिंक को कॉपी कर लेगा and then आप जाके उस WhatsApp ग्रुप में या अपने ईमेल के जरिए आप पार्टिसिपेंट्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं. सो कुछ ऐसे फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं. बहुत ज़रूरी है जानना कि हर टूल्स का हो सकता है इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो, तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि स्क्रीन शेयर करना वो किस तरीके से किया जाएगा आप ज़रूर ट्राई करें. गूगल हैंगआउट, गूगल मीट में यूजली आप देखेंगे राइट कॉर्नर में टॉप में देयर इज 3 डॉट्स. आप उस डॉट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है शेयर स्क्रीन, फुल स्क्रीन,
चैट बॉक्स, फीडबैक, कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आप क्लास रन करना चाहते हैं, यूज दीज ऑप्शंस एंड शेयर योर स्क्रीन विद द स्टूडेंट्स। सिस्टम इज प्रीटी मच सेम। आप अपना स्क्रीन उस विंडो को सिलेक्ट करें जो आप शेयर करना चाहते हैं, एंड क्लिक ऑन शेयर, एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सी व्हाट यू रियली वांट टू शेयर। कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। हम चाहते हैं स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाना। कई बार वी फील लाइक वी हैव टू शो समथिंग वेरी नाइस टू द स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी इंटरैक्टिव, स्टूडेंट्स को मज़ा आए। और बहुत सारे हमारे भाई बहन टीचर्स ट्राई करते हैं, बट कई बार उसकी आवाज़ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मैंने सर कई बार ट्राई किया, मुझे आवाज़ नहीं आई। तो कई बार ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने सिस्टम से कोई भी ऐसा ऑडियो विजुअल शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर देख लें कि आपने कंप्यूटर ऑडियो किया है या नहीं। आपसे पूछा जाता है कई सारी जगहों पे कि आपको क्या कंप्यूटर का ऑडियो भेजना है, तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और तभी आपका जो ऑडियो है स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएगा। यूजली आप देखेंगे वो वीडियो में, ऑडियो में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सबको एक बार पहले ट्राई करें अपने स्टूडेंट से जाने से पहले, बिकॉज कई बार आपकी सिस्टम का कंपैटिबिलिटी हो सकता है मैच ना कर रहा हो। इसलिए पहले क्लास शुरू करने से पहले आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लें कि आवाज़ स्टूडेंट्स तक पहुंचती है या नहीं उस वीडियो की जो आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, राइट। सो सिमिलरली लेट्स से, जैसा कि आपको कुछ देर पहले सचिन जी ने बताया, इसके लिए इंडिया एक बहुत रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोर्स रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। You can choose to find everything, almost everything related to your course on eSkill India. कुछ देर पहले आपने ये भी देखा, about 60% of the courses on eSkill India are free of cost. So that means neither you as a trainer nor your students need to buy anything. They don't have to do anything like that. They just have to come and enroll themselves in the courses and start their learning journey, right? So similarly, let's say you want to share eSkill India. आप अपने शेयर पे जाएंगे और शेयर के बाद में उस स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद यू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स एंड नाउ द स्टूडेंट्स आर एबल टू सी योर स्क्रीन। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल कुछ समय मेरे सामने आया और मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग भी यू आर यूजिंग व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट क्लासेस, एंड आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस, अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ज़रूर मुझे बताएं चैट बॉक्स में लिख के कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द व्हाट्सएप क्लास। एंड बिकॉज देयर इज़ वन नॉट अ केस स्टडी बट अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ द क्लास इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे, एंड दिस इज़ अबाउट व्हाट्सएप क्लास। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे कुछ इसी तरीके की प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज़ व्हाट्सएप क्लास, या व्हाट्सएप के ज़रिए क्या हो सकता है, क्लास हो सकती है नहीं हो सकती है, कुछ इन्हीं सवालों को हम जवाब हम साथ में मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़रूरी है क्लास करने के लिए कि आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो। ज़्यादातर दोस्तों का अपने स्टूडेंट्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी होगा, बट जिनका नहीं है द प्रोसेस टू क्रिएट अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप इज़ वेरी वेरी ईजी। तो आप ऐसे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, इसलिए आपसे बोला जाता है उन लोगों का नाम ऐड करिए जिनको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। तो आपने न्यू ग्रुप सेलेक्ट किया क्योंकि आप नया ग्रुप बनाना चाहते हैं। न्यू ग्रुप के बाद आपने उन लोगों का नाम सेलेक्ट किया जिनको आप इस ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। सो सपोज आपने एक करके सभी स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में डाला। ग्रुप में डालने के बाद में नाउ यू हैव टू पुट अ नेम, अपने ग्रुप का उसका नाम रखना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए नाम रखा है रिटेल क्लास, कुछ दूसरों का क्लास हॉस्पिटैलिटी का हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म का हो सकता है, सिक्योरिटी का हो सकता है। सो अपने ट्रेड के अनुसार, अपने सेक्टर के अनुसार आप इस ग्रुप का नाम रखें और स्टूडेंट्स को ऐड करने के बाद में नाउ यू हैव अ ग्रुप रेडी विच काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। हमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट भी हैं। सो कुछ उस तरीके का ग्रुप आपको चाहिए एक व्हाट्सएप क्लास करने के लिए, राइट। जस्ट हमने देखा किस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों के ऑलरेडी ग्रुप्स हैं, वो जानते हैं कैसे करना है, बट फिर भी जो इसका इस्तेमाल अभी तक उस तरीके से नहीं कर पाए, फॉर दोज पीपल आई वांट टू talk a little bit about what I learned from this teacher in one of the government schools who was also in vocational education. So let's have a look. Let's say now the group is ready. Okay? Now look at these steps as I showed you on the screen.
कुछ इस तरीके से this teacher went on to conduct a class with students using WhatsApp. Now let's look at step number 1. Teacher made the WhatsApp group with her students. Okay, teacher ने अपने students का एक WhatsApp group बनाया and let's say she named that group as IT Champions, IT Champs. Now step 2 is she added all 25 students to the group, and this happened quickly since she already had the number of students. In this case, this happened in minutes as the students had a group and they only had to add the teacher. So step number 2 happened, which involves adding learners and teachers in one group. Step number 3 here becomes, now teacher informed all students about the class today at 12 noon along with the topic. So teacher now shared this on the group that today at 12 o'clock or tomorrow at 12 o'clock we are having this class and the topic is this. Now step number 4 is the class was conducted for 19 students who joined today. The rest did not join. And it's a fact, right? जब आप क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, भले आपकी क्लास में 20-30 स्टूडेंट्स हो, बट यूजली कुछ कम लोग स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशन. सो लेट्स से इनकी क्लास में प्रैक्टिकली 25 में से 19 स्टूडेंट्स ज्वाइन, रेस्ट कुड नॉट ज्वाइन. नाउ स्टेप नंबर 5 इज दिस. The attendance was taken and shared as a picture on the group itself. The teacher, what she did was she took the attendance और उसी का फोटो उस ग्रुप में शेयर कर दिया. Now here comes the important part. Step number 6 is teacher had prepared few slides on a page on the lessons to be taught in advance. So teacher ने already had written notes का इस्तेमाल किया. कुछ केसेस में हो सकता है टीचर ने स्क्रीनशॉट लिया हो इम्पॉर्टेंट लेसन्स का, बुक्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट का, उसको हाईलाइट करके उसका समरी बना के, या हो सकता है शी स्टार्टेड बाय सेंडिंग फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया से किसी वीडियो को दैट शी रियली लाइक, उसका लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया इन एडवांस. स्टेप नंबर 7 now let's say she shared the first slide as a picture from the page she created, and we will have a look at it how this looks like. Step number 8 is she added her audio explaining the page/slide using the voice function of WhatsApp and sent to group as a voice note. Now हम में से बहुत सारे लोग वॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. कई बार जब आप बड़ा मैसेज नहीं लिखना चाहते हैं तो यूजली आप उसको रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, या कई बार अपने ऑफिस में भी आप कम्युनिकेट करते हैं. दोस्तों याद रखिए, जब भी आप नोट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज़ को, आप यूजली कोशिश करते हैं कि अपने शब्दों को बहुत बारीकी से चुनते हैं. यू डोंट जस्ट स्पीक लाइक दैट, यू चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली व्हेन यू रिकॉर्डिंग. So that becomes a really important skill to learn, that when you are describing something, when you are talking about a subject, and the words that you choose and how you choose to describe it becomes a skill in itself, right? The clarity of speech. So कुछ उस तरीके से टीचर ने भी उस वीडियो का, उस स्क्रीनशॉट के बाद में अपना ऑडियो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया. Now, students post watching the slide and hearing the voice explanation asked questions also in the voice format. स्टूडेंट्स जो वॉइस फॉर्मेट में सवाल पूछ पाए, उन्होंने अपना वॉइस ऑप्शन यूज़ करके अपनी ही आवाज़ में उसको रिकॉर्ड करके टीचर से सवाल पूछने की कोशिश की. सो व्हेन दिस बिकम्स अ प्रैक्टिस कि टीचर अपना सवाल पूछ रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो, बिकॉज दे आर आंसरिंग, दे आर ऑल्सो चूजिंग टू रिस्पॉन्ड इन अ लैंग्वेज जो कि इट्स वेरी रिलेटेड टू द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल कि टीचर ने जो पूछा है वो किस तरीके से स्टूडेंट उसको आर्टिकुलेट करते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो. So as a practice, this was getting followed. Now step number 11 is this was repeated for the rest of 2 slides. कुछ इस तरीके का पार्टिसिपेशन टीचर और स्टूडेंट्स के साथ में होता रहा. Step number 12 is now the class ended with attendance shown as a picture by the teacher. क्लास के बाद में टीचर ने क्लास का अटेंडेंस उस ग्रुप में शेयर किया. Step number 11 is students were given a homework question कि आप लोग घर में क्या प्रैक्टिस करेंगे. And the last part is she closed the session by inviting them for tomorrow's session. So this is what a teacher started, conducting classes when things were very new, when we were kind of thinking क्या WhatsApp क्लास हो सकता है. कुछ इस तरीके से एक टीचर ने अपने लेसन की, अपने ऑनलाइन सफर की शुरुआत की. आप में से बहुत सारे लोग भी WhatsApp का इस्तेमाल करते होंगे कुछ अलग ढंग से. मैं चाहता हूँ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे और दोस्तों के साथ में जो शायद इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, शायद वो भी अपना ऑनलाइन WhatsApp क्लास शुरू करना चाहते हैं. सो
चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें हमें बताने के लिए कि आपका व्हाट्सएप क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो स्टेप नंबर 1, अगेन जैसा आपने बोला, मैं उसको पिक्टोरियली आपको दिखाना चाहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अटेंडेंस कुछ इस तरीके से ली गई, एक नोटबुक में मेंटेन किया गया। आगे की उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, हो सकता है ये कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं। लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर लेसन द टीचर वांटेड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड maybe what are the input devices, what are the output devices, how this works. So this thing she thought maybe I can use maybe NSDC's Skill India portal and use material available there to share with the students, and students can choose to watch that video, understand it more deeply, and then when we come together in the class, both of us have discussion points that we can build a meaningful answer on. So कुछ इस तरीके से चीज़ें शेयर की गई स्टूडेंट्स के साथ में और इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। सो व्हाट्सएप पे यूजली आप स्टूडेंट्स को क्लास का टाइम ज़रूर बता दें, अदरवाइज स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि कितने बजे क्लास चालू है नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट डिसिप्लिन दैट स्टूडेंट ऑल्सो फील कि ऐसा ना हो कि हमें कभी भी कुछ भी भेज दिया जाता है, बिकॉज इट्स अ क्लास, इट्स अ लर्निंग जर्नी, इट हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड। हम स्टूडेंट्स को हमेशा बता दें, देखिए कोशिश करें कि हमारी क्लास अगर 12 से 1 बजे है तो हम 12 से 1:30 बजे तक साथ में रहेंगे। अगर कुछ आपका सवाल आगे पीछे रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। आप कोशिश करें कि पीयर ग्रुप बनाएं, एक छोटे छोटे शेयरिंग ग्रुप्स बनाएं स्टूडेंट्स के, जो कि एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, एंड बी पार्ट ऑफ दोज ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर शेयरिंग विद ईच अदर, बिकॉज दैट्स वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन क्लास, having that relationship not with the larger class alone but with the people in the smaller groups also, कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स में उनके साथ रहें, उनके सवालों को समझें और फिर उनका आंसर करें। सो कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप क्लास की शेयर किया गया। सो suggested practice that I want to talk about now is very simple in a summary, is when you are starting, start by summarizing previous day's session, कि आपने पिछले दिन स्टूडेंट्स को क्या सिखाया। Build the relevance there. Use good examples. Start with the humor. Students को हंसाइए। अभी बहुत एंग्जाइटी वाला टाइम है, कोविड के चक्कर में हमें से बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, ट्रेनर्स परेशान हैं, बट टाइम है कि जब हम साथ मिले दूसरे के, हम कैसे वो दुख बांट सकते हैं, कैसे एक दूसरे की खुशी में सहारा बन सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब मिले एक दूसरे से स्टूडेंट्स के साथ में, हम हंसें, खुशी से रहें, और फिर देन वी लेट्स स्टार्ट आवर लेसन कि हम लोग आज मिलेंगे। जैसे आज हम लोग बात करना चाहते हैं किस तरीके से हम किसी अजनबी से या कभी किसी कस्टमर से पहली बार मिलते हैं तो हम उनको कैसे ग्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और चलिए देखते हैं एक वीडियो की मदद से। तो कुछ उस तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करिए कि स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आया, कि इंटरेस्टिंग तरीके से ये सिखाया जा रहा है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू सेशन। कोशिश करें कि जब आप इंट्रोड्यूस करें उस सेशन को, टेक योर टाइम, आप उसको लोकल एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट करें जो आपके उनके आसपास मौजूद हैं। कोशिश करें कि जिससे वो रिलेट कर पाएँ, ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। भले ही बुक में हो सकता है किसी दूसरी चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया, बट उनको समझाने के लिए आज के टाइम से रिलेटेड कुछ उन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि आप ये मत सोचिए कि स्टूडेंट्स अगर फिजिकली मौजूद नहीं है तो एक्टिविटी नहीं हो सकती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्टिविटी इज द क्रक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग इट इज सेड, राइट? So when students perform those activities, right, that's when the real learning happens. And the learning happens when not only when they're performing it, is also when they come and share with not only you as a trainer, but with the entire class. So it's important to create environment, that system in the class, where students are coming and they are sharing their learning experience with the other students. बहुत ज़रूरी है कि ऐसा environment create किया जाए, right? And doubt solving therefore becomes really important. You as a trainer to help them make a meaning of an answer. Don't give them the answer, right? उनको बोलो ठीक है, this is your doubt, okay, what are the other doubts in the class, and then you build on that doubt with them, right? And again, like I said, it's very structured way. आपको कोशिश करना है to maintain a little bit of discipline. I know it's very difficult time, और my salute to all of you is because you never gave it up. एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन सबके सामने आई कि एकदम से हमें डिजिटली पढ़ाना है। वी वर नेवर रेडी। हो सकता है कि हमने कभी इससे पहले खुद भी अटेंड ना किया। एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए आई, और उससे भी ज़्यादा वो स्टूडेंट के लिए आई जिसने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी पढ़ाई होती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट नोबडी सेड वी वांट टू इट, हम नहीं करेंगे।
we adapted. हमने adaptability देखा, हमने देखा कि हम इसको कर सकते हैं और हमने अपनी स्किल को केवल अपग्रेड ही किया है। जो इंसान आप थे लॉकडाउन से पहले और जो इंसान आज आप हैं, आपने कई नए स्किल्स को अपने अंदर अपग्रेड किया है। आपके अंदर बहुत सारी नई स्किल्स आ चुकी हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू आप ना सिर्फ अभी फिजिकल क्लास ले सकते हैं, आप डिजिटल क्लास भी ले सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द सजेस्टेड प्रैक्टिस, be that doubt solver for the students, help them, make them meaningful. And the last part is, of course, give homework to the students. Homework not, boring homework. Find something really useful for them. Think about your child. Think about you. कि अगर आपको एक सेशन के बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूँ, which is very boring, how will you feel about it? So think from the students' point of view. Make them feel happy. You will feel happy because you have done a very, very good job. And this is the way to go about, engaging with the students. So that's all from me. I'll pass it here from here to Sachin to take it over. Thank you, Vikrant. This is Preeti. Just before we see a free online tool on Use India, there is an announcement that we wish to share with everybody. Use India, NSDC's Digital Skilling Initiative and Microsoft have joined hands. They have joined hands to build digital skills amongst 1 lakh youth in India, students and youth in India. And we wish to share with you that you all can freely make use of these digital skilling opportunities by coming to eSkill India and clicking on the link which is displayed on your screen right now. अगर आप eSkill India पर आएंगे, आप ये ऊपर बैनर देखेंगे ब्लू कलर का। यहाँ पर आने वाले वेबिनार्स के अनाउंसमेंट्स हैं। डिजिटल स्किलिंग NSDC की eSkill India और माइक्रोसॉफ्ट की टीम इकट्ठे ऑफर कर रही है इन कॉमनली होस्टेड वेबिनार्स। हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप आइए एंड प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फ्री ऑनलाइन डिजिटल स्किलिंग वेबिनार्स. Already thousands of students have attended it, and by the way, as I was talking some time back, all of us are students and we should be lifelong learners, and including teachers, trainers and our students, everybody is most welcome to attend these webinars. Please click on this link and register yourself for the upcoming webinars. The subjects range from basic digital literacy topics to especially Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Teams, how to operate Microsoft Teams. That is, by the way, one of the digital skilling tools also. It is possibly a tool for conducting online classes. So you can attend those sessions also, which will be deep dive into various Microsoft technology tools. There is a second announcement that I wish to make and share with all of you. Another free opportunity, and this time it is NSDC's eSkill India's partnership with British Council's English Score app. This we have done especially during the current lockdown times to enable our students to upgrade their English knowledge, to upgrade their basic English skills, talking skills, comprehension skills, जिसमें वो घर बैठे एक फ्री ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, कॉमनली certified by NSDC's eSkill India as well as British Council, and they can test their skills after upgrading them, get this free e-certificates. This is also offered to 1 lakh of the students from our ecosystem. I invite all of you to use the coupon code displayed on your screen right now. The coupon code is NSDCTP20. NSDCTP20. Please use this coupon code, download this app and enhance your English skills. I do hope that these two announcements will come in very handy for you. They will help in enhancing your digital skills. Absolutely offered from Microsoft, an authority on digital skilling, and also enhancing your English skills. Actually offered by an authority on English, that is British Council, coming to you through eSkill India, that is NSDC's digital initiative. Next,
I would like to share with you very quickly that there is a free tool available on the next slide. You will see that there is a free tool available on eSkill India. When we were showing the demonstration, you would have noticed that there is a link called Book Online Class at the top of the eSkill India homepage. You can actually book an online class directly from here. I request Sachin to take this over. When you visit East India website, you will find that there is a book online class tool available at the top right corner of the homepage. When you click on this link, which says Book Online Class, you will see a drop-down menu, and in the drop-down menu, you will find an option Upgrade. So this tool is provided by Upgrade. When you click on that Upgrade option, you will see a form, something like this, which is displaying on the slide as well. Free online class booking tool. So a form will open up. Using this form, you need to tell that what is your name, which training partner you belong to, your email number, your email ID, mobile number, and the batch ID you want to conduct online classes, and then you will click on the submit button. So after you fill in this form, your request will go to the respective team, who will then something like this. This message will appear to you when you submit this form, and your request will be submitted to the respective team, who will then send an email to you with the details of the logins that you need to use to log into the portal and start the online class. So there are majorly three things that you will find in that email. One is the trainer login ID. Second thing is the student login ID. So as you mentioned 30 on the previous page, for example, if you mention number of students in the batch, in this text field as 30, so you will receive 30 email IDs and login IDs for the students that you need to share with your respective students. So there is the login IDs will be in sequence like student 1, student 2. I'm just taking an example. The name could be anything, like NSDC student 1, NSDC student 3, 4, 5, 6. So those will be in sequence. You need to assign each login ID to each one of the students. Okay. Now, once you receive this email, you will, as a trainer, you will also receive your login ID. So as a trainer, you need to visit the live-admin.upgrade.com portal. When you need to log in, you need to visit this URL, log in using your credentials given to you through an email. Once you log in, you will see a screen like this, wherein you will see create your class button at the top right corner. Click on that button. You need to put in your class name, what is the name of the class, when do you want to start this class, date and time you need to mention. Then click the create class button at the bottom right corner. Then you need to tell that who all students need to attend this class. So as I mentioned that you have received an Excel containing the email ID and the login ID of the students, 30 students that you mentioned in the form. So you need to add all those students one by one. So there are two options if you can see on the screen, add students individually, and there is one more tab, add students using CSV file. So if you want to add students one by one 30 times, then you can use this add students individually tab, or you can straight away the Excel file that you received through email, you can straight away upload that Excel file and all the students will become part of this list. The next thing, you need to add your name and email ID as a teacher, and for your class will be scheduled. After you schedule a class, you will see these options that you can edit the class, you can copy the class URL. This copy class URL you need to share with the student. Okay, you can start the class, finish the class, and cancel the class. Now, once you schedule the class, on the scheduled date and time, you as well as student, both
trainer as well as students need to log into live.upgrade.com. They need, once you log in, as a trainer, once you log into live.upgrade.com, you will see a screen wherein the details of all the scheduled batches will appear to you. Here, join now button is visible. So this join now button will be visible to the student. For a trainer, launch now button will appear. So once a trainer clicks the launch now button, then only students will see the join now button. Okay, students need to click on the join now button to join the class. So this is the tool that you can use in Use India to conduct the online class. That's great, Sachin. Thank you for sharing this in detail with everybody. As we come to a close of this session, I thank everybody for joining this. But before closing, I invite all of you on behalf of all of us here to ask any questions that you have. Please text those questions in the text box and we will pick up some of them. There are some questions which I would like to pose. Many of our audiences today have shared this query that how do they share videos with audios through these online learning tools like Zoom, Google Meet, MS Teams, etc. So would Vikrant like to take this question? Yeah. Sure, Niharika. I think that's a very important question because many teachers actually want to share their screen and they want to see किस तरीके से आप ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं. तो मैं ये एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ. जब आप मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूँ एंड आई विल शो यू कि जब आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं तब आपके पास वो ऑप्शन ज़रूर आता है और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ये ऑडियो शेयर कर पाएँ. सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड आई टेक यू बैक टू द स्लाइड. आप मुझे कंफर्म कर दीजिए ये बात कि आप देख पा रहे हैं. ठीक है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन बेसिकली आता कहाँ पे. सो बहुत सारे टूल्स में जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं इस खास तौर पे स्क्रीन पे ज़रूर आप खास ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ नीचे आप कॉर्नर में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे शेयर कंप्यूटर साउंड, राइट. सो शेयर कंप्यूटर साउंड वो ऑप्शन है जिससे आपके कंप्यूटर का ऑडियो स्टूडेंट तक पहुँचेगा, स्पेशली जब आप एक वीडियो प्ले करेंगे. तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो आप अपनी स्क्रीन में सबसे नीचे आप 2 डब्बे देख सकते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज शेयर कंप्यूटर साउंड एंड सेकेंड इज ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिपिंग. चूज द ऑप्शन शेयर कंप्यूटर साउंड. सो दैट्स व्हेन आपका जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो का रिकॉर्डिंग आवाज़ है, वो स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है. सो आई थिंक दैट्स द वे टू डू इट, निहारिका. Thank you, Vikrant. Here's another question. How can they make the online learning classes more effective, especially in the regions which have very poor network connectivity, or if they have only 2G network which is available, and then they're not able to stream any YouTube videos or download those videos? How can then the specialist be more effective for the students? I'll take that question. There are many tools available in the digital arena. Some of them we saw. All of our students and all of the teachers in all the geographies in all locations may not be equally may not have equally good infrastructure at all times. So there are different innovative methods that we as teachers can find out. For students who can join online classes, we shared the details. For those who cannot join online classes, I have heard from many of the teachers who have shared with us that what they do is that they create a structured learning plan. Structuring is very important, as I was saying in the beginning. Break up the learning into days or weeks for them and then fix the time where audio calling can be done. There are some free audio calling tools, or even WhatsApp provides some free audio calls. So for those of the students who have difficulty in joining live classes because of bandwidth or other issues like 2G etc. that you are saying, breaking up the modules into a timetable for them and then prefixing
a time to connect with them through audio calling also helps. And these students, if once they have their WhatsApp, then you can share with them some self-paced learning material on WhatsApp also, and at a pre-scheduled time, connect up with them for audio-based connect for motivating them and for answering their questions. Thank you, ma'am. That was quite informative for all these people. There's another question on PG only. Is there a best tool which will serve properly in these low connectivity areas out of all the tools that we have discussed today? So I think one will have to calibrate and see which tool is working best for you. I actually handled this question at the beginning. I said you'll have to see what works best for you and your audience, and what actually works best in terms of caching for your kind of content. Sometimes we have a very heavy content which we would like to online stream, but sometimes, and I was also reading some of the questions, you wish to just use something as simple as TeamViewer because you want to take control of your student's screen. I saw some computer teachers writing some questions that, what do you think about TeamViewer? TeamViewer is a very good tool if you want to show them your screen or you want to take charge of their screen to actually demonstrate to them a method of solving a specific issue, especially for computer science related topics. So I think it's a very, the specific tool that one would like to use has to be calibrated based on what works best to the subject and to the environment that one is trying to target. We have tried to showcase to you all of the tools possibly available, and I think you have already been using many of them, and see what works best for you. Thank you, ma'am. Since we're running out of time, I'll just pose one last question. This is from Ms. Kadia, she's saying that what are the best practices for setting up a virtual classroom for the students? Vikrant, would you like to take this question? Right. And that's a very important question before starting, the online class. What are the good practices, are the best practices that one need to see? I believe one important fact, is to be well versed with the application that you're using. Because at times in between, there are some features that we probably do not know, and because of that, the experience can go for a toss. So as a trainer, it's very important that whatever application that you are using, you are well versed with it. You know about the features which can work or which might not work. Given that you can have different level of connectivity or internet bandwidth. कहीं आपका internet bandwidth कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है. So use that first. Second is, as a trainer, you would probably want to switch on your video. So be in a nicely lit room जहाँ पे रोशनी बराबर हो, जहाँ से students आपको clearly देख पाए. कोशिश करिए कि आप उस रूम में हैं जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं है. Because you will, as a trainer, you will need to facilitate many conversations. So आपको ज़रूरी है कि आप जहाँ पर हैं, कोशिश करें कि शांति रहे वहाँ पे. There is not noise disturbance in the background. If you are able to take care of these things in the beginning, and like I told you, there's some generic guidelines while you are conducting online classes. For example, asking students to keep on mute, or asking students to unmute only when they have to ask questions, or using chat box option. So all these features allow you to interact with your students even when you are talking to them, right? So these are some practices that you can start with, and do let us know about your experience. That how does it go for you? That's all. Thank you, Vikrant. We are now coming to the end of this session. On behalf of our Use India team, I would like to extend my thanks to the team behind planning and putting together this webinar, Mr. Vikrant Soni and Mr. Vikrant Chandela from Vardhani Foundation, who are also our billing partners. I would also like to extend my sincere thanks to our NSDC's Learning Research, Digital Skills and Technology team members, Ms. Preeti Arora, Sachin Agarwal, Meghna Puri and Tanya Arun, for arranging such an informative session for us today. We hope to conduct many such sessions in future and increasing the outreach of the digital skilling in our ecosystem
and keeping the momentum of skilling ongoing. I would also like to thank all our audiences today. We hope that you enjoyed the session, it was useful for you all, and this will further strengthen the digital training initiative taken forth by you all. Thank you very much for attending us. I would like you all to fill in a feedback form which is there in the chat window to help us make improvements in these sessions going forward. Thank you all for attending. Thank you everyone. Please fill in the feedback which is provided in the chat box, everyone.